In the name of Allah, the most beneficent, the most merciful. Assalamu alaikum. My name is Professor Muhammad Masood. Welcome to our channel Easy English with Professor Muhammad Masood. ये हमारी आर्ट ऑफ ट्रांसलेशन की वीडियो है और इसमें हम पढ़ेंगे रूल नंबर 154. बिफोर आई स्टार्ट दिस वीडियो लेसन आई लाइक टू से वन थिंग. अच्छे लोगों का तुम्हारी ज़िंदगी में आना तुम्हारी किस्मत है, लेकिन उनको संभाल कर रखना तुम्हारा हुनर. यानी इंसान के पास ये हुनर होना चाहिए कि अच्छे लोगों की वो कदर भी करे और उनको संभाल कर रखे. आइए देखते हैं कि इस वीडियो लेसन के अंदर हमारे पास किस तरह के सेंटेंसेस हैं. जैसा कि अंधा एतमाद करने की भी एक हद होती है, या नखरे दिखाने की भी एक हद होती है, या शोर मचाने की भी एक हद होती है, या शरारतें करने की भी एक हद होती है. दरअसल ये कुछ इस तरह के सेंटेंसेस हैं जिसमें हम अक्सर बर्दाश्त का जो है वो अजहार करते हैं. असल में इन सेंटेंसेस के अंदर यानी इस तरह के जो जुमले होते हैं इनमें हम मायूसी, नापसंदीदगी, थकन या बर्दाश्त की हद को बताने के लिए हम ये जुमले बोलते हैं. अब आइए देखते हैं कि इंग्लिश में इन सेंटेंसेस के लिए हम कौन सी स्ट्रक्चर यूज करेंगे. अच्छा, इसकी स्ट्रक्चर में देयर इज अ लिमिट टू की हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू और देयर इज अ लिमिट टू के बाद हमने वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी का इस्तेमाल करना है और उसके साथ हम नाउन भी यूज करते हैं या इंग फॉर्म पे स्टॉप करते हैं. अच्छा, इसके अलावा हम ये भी कह सकते हैं देयर इज अ बाउंड्री फॉर, उसके बाद भी हम इंग फॉर्म या नाउन यूज कर सकते हैं. देयर इज अ बाउंड्री फॉर. लेकिन जो कॉमन एक्सप्रेशन है या जो पॉपुलर एक्सप्रेशन होता है स्पोकन लैंग्वेज के अंदर, वो हम ज़्यादातर एग्जाम्पल में इस्तेमाल करते हैं. इसलिए मैंने सिर्फ फार्मूले के अंदर भी आपके लिए देयर इज अ लिमिट टू का यूज़ किया है. लेकिन अगर आप चाहें तो देयर इज अ बाउंड्री फॉर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और उसके बाद भी वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के बाद आईएनजी आएगा, उसके बाद नाउन आएगा. तो इट इज़ योर चॉइस कि आप देयर इज अ बाउंड्री फॉर यूज़ करते हैं या देयर इज अ लिमिट टू. लेकिन मैंने इन एग्जांपल्स के अंदर देयर इज अ लिमिट टू का इस्तेमाल किया है. आइए अब हम इनकी एग्जांपल्स को देखते हैं. पैसे खर्चने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू स्पेंडिंग मनी. देयर इज अ लिमिट टू स्पेंडिंग मनी यानी जब आदमी कोई बहुत ज़्यादा खर्च कर रहा हो तो उस वक्त हम ये सेंटेंस बोलते हैं कि देयर इज अ लिमिट टू स्पेंडिंग मनी. बहस करने की भी एक हद होती है. यानी अगर कोई बंदा ज़्यादा बहस करता हो ना तो उसके साथ हम ये सेंटेंस बोलते हैं देयर इज अ लिमिट टू आर्गुइंग. देयर इज अ लिमिट टू आर्गुइंग. काम करने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू वर्किंग. यानी अक्सर लोग जब काम करते हैं करते ही चले जाएंगे, उसको स्टॉप नहीं करेंगे. और अक्सर वाइफ जो होती हैं वो अपने हस्बैंड्स को कहती हैं कि देयर इज अ लिमिट टू वर्किंग. देयर इज अ लिमिट टू वर्किंग. झूठ बोलने की भी एक हद होती है. अगरचे झूठ बोलना गुनाह है, झूठ नहीं बोलना चाहिए, लेकिन अगर ज़्यादा कोई बोलता हो तो उसके लिए हम ये जुमला बोलते हैं देयर इज अ लिमिट टू लाइन. देयर इज अ लिमिट टू लाइन. मेहरबान होने की भी एक हद होती है. यानी इंसान किसी पर मेहरबानी करता है तो वो फिर परेशानी का बासी बंदा दूसरा बन रहा होता है, तो उसको हम ये कहते हैं देयर इज अ लिमिट टू बीइंग काइंड. देयर इज अ लिमिट टू बीइंग काइंड. दुख सहने की भी एक हद होती है. यानी इंसान तकलीफें कब तक बर्दाश्त करेगा, तो फौरन वो कह देगा देयर इज अ लिमिट टू एंड्योरिंग पेन. अच्छा, एंड्योर होता है बर्दाश्त करना, पेन दुख या दर्द को कहते हैं. देयर इज अ लिमिट टू एंड्योरिंग पेन या देयर इज अ बाउंड्री फॉर एंड्योरिंग पेन. किसी को याद करने की भी एक हद होती है. यानी अगर आदमी किसी को बहुत ज़्यादा याद करता हो तो वह बंदा दूसरे को कहता है भाई किसकी याद करने की हद है ना. देयर इज अ लिमिट टू मिसिंग समवन. देयर इज अ लिमिट टू मिसिंग समवन. समझौता करने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू कंप्रोमाइजिंग. अच्छा, कंप्रोमाइज होता है समझौता करना, यानी आपस में मामला तय करके टाइम गुजार लेना. तो देयर इज अ लिमिट टू कंप्रोमाइजिंग या देयर इज अ बाउंड्री फॉर कंप्रोमाइजिंग. अंधा एतमाद करने की भी एक हद होती है. अच्छा, अंधा एतमाद किसी पर नहीं करना चाहिए, अक्सर इंसान नुकसान उठाता है. देयर इज अ लिमिट टू ट्रस्टिंग ब्लाइंडली. देयर इज अ लिमिट टू ट्रस्टिंग ब्लाइंडली. ट्रस्ट होता है एतमाद करना, ब्लाइंडली अंधाधुंध यानी कि. तो देयर इज अ लिमिट टू ट्रस्टिंग ब्लाइंडली या देयर इज अ बाउंड्री फॉर ट्रस्टिंग ब्लाइंडली. फजूल बातें बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेटिंग नॉनसेंस. देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेटिंग नॉनसेंस. अच्छा, टॉलरेट होता है बर्दाश्त करना, नॉनसेंस मीन फजूल बकवास वगैरह के लिए ये लफ्ज हम यूज करते हैं. तो देयर इज अ लिमिट टू टॉलरेटिंग नॉनसेंस. जिल्लत बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू बीइंग इंसल्टेड. अच्छा, बी इंसल्टेड होता है जिल्लत बर्दाश्त करना, यानी उस बेइज्जती वगैरह हो रही हो तो चुप हो जाना. तो देयर इज अ लिमिट टू बीइंग इंसल्टेड. बहाने सुनने की भी एक हद होती है. देयर इज अ लिमिट टू लिसनिंग टू एक्सक्यूजेस. There is a limit to listening to excuses या there is a limit for listening to excuses. अल्जाम बर्दाश्त करने की भी एक हद होती है. There is a limit to being blamed. अच्छा, being blamed यानी बर्दाश्त करने के सेंस में हमने इसको इस्तेमाल किया और बड़ा खूबसूरत इसका इस्तेमाल है. There is a limit to being blamed.
there is a boundary for being blamed. غلطیاں نظر انداز کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to ignoring mistakes. there is a limit to ignoring mistakes. there is a boundary for ignoring mistakes. بدتمیزی برداشت کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to tolerating rudeness. اچھا ٹالریٹ برداشت کرنا ہوتا ہے, روڈنیس کہتے ہیں بدتمیزی کو, تو there is a limit to tolerating rudeness یا there is a boundary for tolerating rudeness. چیخنے چلانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اکثر لوگ جب کوئی چیخ چلا رہے ہوتے ہیں تو ہم اس کو یہ جو سینٹنس بولتے ہیں, there is a limit to shouting. there is a limit to shouting یا there is a boundary for shouting. ہر وقت ٹوکنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. ٹوکنا ہوتا ہے یعنی کوئی بندہ کام کر اس کو منع کرے, یار کیا کر رہے ہو, کوئی اور کر رہے ہو, یہ کیا کر رہے ہو, تو اس کو کہتے ہیں انگلش میں بولتے ہیں نیگ, نیگ, ٹوکنا کسی کو. تو there is a limit to nagging. there is a limit to nagging یا there is a boundary for nagging. فضول سوال کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to unnecessary questions. there is a limit to unnecessary questions. یہاں پر اس سینٹنس کے اندر ہم نے limit to کے بعد صرف unnecessary question یعنی نون یوز کیا ہوا ہے, اور اسی طرح سے there is a boundary for unnecessary question یعنی ہم چاہیں تو ایک فارم یوز کریں, چاہے تو اس کے صرف نون بھی استعمال کر سکتے ہیں. it depends on the situation. نخرے دکھانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to showing attitude. there is a limit to showing attitude. اچھا ایک اور لفظ ہوتا ہے tantrum, tantrum, tantrum. اس کو بھی to show tantrum بھی کہتے ہیں, نخرے دکھانا, لیکن وہ تھوڑا غصے والا اور بڑی اکڑ والا, بہت زیادہ اسٹرانگ ورڈ تھا, اس لیے ہم نے لائٹ ورڈ یوز کیا ہوا ہے. there is a limit to showing attitude یا there is a boundary for showing attitude. there is a boundary for showing attitude. کسی کے صبر کا امتحان لینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to testing someone's patience. there's a limit to testing someone's patience یا there is a boundary for testing someone's patience. پیشنس صبر کو کہتے ہیں, اور ٹیسٹ ہوتا ہے آزمانا کسی کو. انتظار کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to waiting. there is a limit to waiting یا there is a boundary for waiting. خاموش رہنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to staying quiet. اچھا stay quiet ہوتا ہے خاموش رہنا, چپ رہنا چاہیے, تو there is a limit to staying quiet یا there is a boundary for staying quiet. چیزیں ادھار لینے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to borrowing things. اچھا بارو ہوتا ہے ادھار لینا, تو there is a limit to borrowing things یا there is a limit for borrowing things. تنگ کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to teasing. there is a limit to teasing یا there is a boundary for teasing. تو کسی کو تنگ کرنا اچھی بات نہیں ہوتی, کوشش کریں کہ ہم کسی کو بھی تنگ نہ کریں, کوئی ہم سے تنگ نہ ہو. مدد مانگنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اکثر لوگوں کو عادت ہوتی ہے ذرا ذرا بات کے لیے مدد مانگنا شروع کر دیتے ہیں. اٹس ناٹ اے گڈ ہیبٹ. there is a limit to asking for help. ask for ہوتا ہے مانگنا, تو there is a limit to asking for help یا there is a boundary for asking for help. شرارتیں کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to playing pranks. there is a limit to playing pranks. اچھا play pranks شرارتیں کرنا ہوتا ہے, یا make mischief ہوتا ہے شرارتیں کرنا. there is a limit to making mischief. لیکن یہ پلینگ پرینکس ذرا اچھا لفظ تھا, تو میکنگ مسچیف کی جگہ میں نے پلینگ پرینکس کا یوز کر لیا. فضول سوال کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to asking unnecessary questions. there is a limit to asking unnecessary questions یا there is a boundary for asking unnecessary questions. دیکھیں asking ایک فارم ہے, اس کے ساتھ ہم نے نون کا یوز کیا ہوا ہے. شور مچانے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to making a noise. there is a limit to making a noise یا there is a boundary for making a noise. ٹی وی دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. اکثر گھر میں بچے بہت ٹی وی دیکھ رہے ہوتے ہیں, بچوں کو پیرنٹس کہہ رہے ہوتے ہیں بھائی ٹی وی دیکھنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to watching TV. there is a limit to watching TV یا there is a boundary for watching TV. فون استعمال کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to using the phone. آج کل چونکہ بچے بہت زیادہ فون استعمال کرتے ہیں اور ان کو استعمال نہیں کرنا چاہیے, کریں بس تھوڑی دیر کے لیے 10-15-20 منٹ فار لمیٹیڈ ٹائم, لیکن اس کی بھی چونکہ ایک حد ہونی چاہیے. تو فون استعمال کرنے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to using the phone یا there is a boundary for using the phone. دیر سے سونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. there is a limit to sleeping late. اچھا دیر سے سونا اگرچہ بری عادت ہے, لیکن اس کے باوجود بھی کچھ حالات ایسے ہوتے ہیں کہ ہم جلدی کر ہی نہیں پاتے, ہیلپ لیس لگ رہے ہوتے ہیں کہ وی آر ہیلپ لیس, بے بس سے ہوتے ہیں, تو دیر سے سونے کی بھی ایک حد ہوتی ہے. تو there is a limit to sleeping late. there is a limit to sleeping late. So you must have noted that in all these sentences ہم نے there is a limit to استعمال کیا. اچھا اس میں ایک پوائنٹ چھوٹا سا, لمٹ کے ساتھ ہم آف یوز نہیں کر سکتے, او ایف. there is a limit of sleeping late نہیں کہہ سکتے, یہ ہمیشہ there is a limit to sleeping late ہوتا ہے. اور دوسرا میں نے there is a boundary for sleeping late, there is a boundary for
اور دیر از اے لمٹ ٹو. ہم استعمال کیا اس کے بعد انک فارم اور اس کے بعد ناؤن یوز کیا ہوا ہے. آئی تھنک دیٹس انف فار ٹوڈے. Thank you very much. Wish you best of luck. Take care. Goodbye for now.